अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है 7 रीजंस दैट यू शुडंट बाय एन Xbox Series S या X। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। और हाँ, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं न्यू Xbox Series X या S बाय करने के लिए, तो here's why you might want to avoid Microsoft Xbox Series X या S. अब there's never been a better time to become a gamer. Game studios are constantly making large and small astonishing game and pushing the boundaries of what a video game can be. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि where's best to play the games, तो how about an Xbox Series S या X? अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो स्पेंड मनी ऑन Xbox Series X या X, तो यू मे वांट टू पॉज। अब ये अनडाउटेबली काफ़ी पावरफुल मशीन है, बट ये कंसोल शायद आपके लिए नहीं है, या फिर आप लोग कुछ अरसे के लिए इंतज़ार कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। Here's all the reason you shouldn't buy an Xbox Series X या X. डिस्क्लेमर, ये वीडियो Xbox वालों के लिए हेट वीडियो नहीं होने वाली है, बस मैं सिर्फ रीजंस बता रहा हूँ। एंड आई ऑनेस्टली लव Xbox, but to be honest, I need to tell people about it. Hashtag no hate Xbox. Let's move to number 1. अब Microsoft वालों ने अपनी लाइफ एज अ वीडियो गेम कंपनी नहीं खोली। Chances are your first introduction to Microsoft was through its Windows operating system, which still goes strong to this day. अगर आप गेम खेलना चाहते हैं ऑन अ कंप्यूटर, आपको विंडोज गेमिंग सपोर्ट यूज करना पड़ता होगा, बट फॉर अदर सिस्टम्स लाइक मैक और लिनक्स इट इज अ रेयरिटी। थोड़े अरसे के लिए माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट पार्टी पीसी गेमिंग सपोर्ट sucked because the company focused on the Xbox console, but thankfully the situation is different now. वो इसलिए कि now Microsoft game releases on Xbox and PC simultaneously, जो कि एक तबाही और फैंटास्टिक बात है। But it still triggers this question कि why buy an Xbox? अब ये तो एक फैक्ट है कि एक गेमिंग पीसी is always going to be more powerful than an Xbox, क्योंकि आप लोग ये सारी गेम्स अपने पीसी पे खेल सकते हैं, and you can even use Xbox Game Pass. You guys can still use an Xbox controller if you want on the PC, और ये सब चीज़ें आप लोग पीसी पे कर सकते हैं। Number 2. Now the Xbox Series S has 512GB of internal storage while the Series X has 1TB. अब एक आप लोगों को छोटा सा फन फैक्ट बताता हूँ। अब ये कंपनी आप लोगों को कह तो रही है कि इसमें 512GB है या 1TB है, बट इन रियलिटी ये आपको पूरी स्टोरेज नहीं मिलती, क्योंकि सम ऑफ द स्टोरेज इज रिजर्व फॉर द सिस्टम। इसलिए आपको सिस्टम में समटाइम शो होगा कि 980GB अवेलेबल है सिर्फ। तो इसकी सिर्फ इसी वजह से ही होता है, तो आप लोग परेशान ना होना कि ये बाकी स्पेस किधर गई है, तो बस सिस्टम ने रिजर्व किया है, दैट्स ऑल। बोथ कंसोल यूज द सेम ब्लेजिंग फास्ट SSD डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर माइक्रोसॉफ्ट कंसोल। हाउएवर आपकी जो ये 1TB की स्टोरेज इतनी जल्दी फिलअप होगी कि आप लोग विल बी इन शॉक। अभी तो सिर्फ मैंने 20 गेम्स किए हैं और ये फुल हो गए एकदम से। वो इसलिए कि मैनी मॉडर्न गेम्स हैव लार्ज स्टोरेज फुटप्रिंट्स, तो इसलिए बहुत जल्दी फिलअप होता है। अब PS5 में इट इज इजी टू एक्सपैंड द स्टोरेज। यू कैन इवन ऐड एन M.2 SSD to your PS5. Now on the Xbox it itself is a different story. You have to use the proprietary Seagate expansion card, while you can use other external storage for older games. Those optimized for the Xbox Series S/X must use Seagate device. इवन तो माइक्रोसॉफ्ट वाले क्लेम कर रहे हैं कि अदर मैन्युफैक्चरर के पास अपने वर्जन्स होंगे इवेंचुअली, बट ये अभी तक हकीकत नहीं बनी। तो इसका मतलब आप लोगों को वो ही एक्सपेंसिव वर्थलेस Seagate SSD यूज करनी पड़ेगी। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। On to number 3. While virtual reality is still a nice way to play games, but it's still a growing concern. अब बहुत सारे इनोवेशन और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स VR वर्ल्ड से हमें देखने को मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गेम्स आप लोग Series X या S पे नहीं खेल सकते। According to Xbox boss Phil Spencer, he thinks it's better that the company focus on software because it will scale better in long term. In the past, he called VR isolating. Now Sony वालों ने एक entirely different approach ली है with the PSVR2। इसके बारे में मैंने आपको CS 2022 वीडियो में बताया है, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, तो इसमें आपको PSVR2 की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब PSVR2 से हमें पता चल रहा है कि they are committed to the VR world. Sony is even building exclusive VR experience from its top franchise like Horizon Call of the Mountain. Let's move to number 4. अब ये controversial one है।
and ultimately comes down to personal preference. Lekin many would agree that Sony simply have better exclusive games. Franchises like Spider-Man, Ratchet and Clank, The Last of Us, Uncharted and Horizon can only be played on the PlayStation. As mentioned, the Xbox doesn't strictly have exclusives, lekin franchises like Gears of War and Halo do not have quite the same allure they once did. That said, the scales could easily tip over time as the current generation console mature. अब big news ये है कि Microsoft वालों ने Activision को खरीद लिया है, तो we'll see आगे क्या होता है। और Activision अगर आपको नहीं पता तो Call of Duty, Black Ops जो भी है, जितनी भी पहले आई थी, World War 2 या Warzone जो अभी चल रही है, Black Ops, Cold War, ये सारी Activision वालों ने बनाई थी और Microsoft वालों ने Activision को खरीद लिया है। And one more thing कि Call of Duty Modern Warfare is coming to Game Pass, Xbox, मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। On to number 5. अब Microsoft consoles comes in two variants, the Xbox Series S and Xbox Series X. अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो इसलिए कि Sony also has two versions of PS5 that are identical apart from the disk drive. लेकिन things aren't the same with the Xbox Series S/X. The Series S has less RAM and storage और ये सिर्फ 1440p तक रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। इसका प्रोसेसर स्लो है और सिर्फ डिजिटल गेम्स ही खेल सकता है। इन शॉर्ट, इन्होंने एक बर्गर लिया है और उसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले और ऐसे ही Xbox Series के साथ किया है। So in short, it's a nerfed console and not the true next generation experience you expect. On to number 6. The Xbox controller is fantastic, which is why Microsoft didn't change it much for the Xbox Series S and Xbox Series X. It did get some improvements, like it is nicer to hold, has textured triggers और इसमें better D-pad है। लेकिन कुछ new innovations अगर Xbox वाले इस कंट्रोलर में ले आते तो बहुत अच्छा हो जाता। When you compare it to Sony's DualSense जिसमें टच पैड है, हैप्टिक फीडबैक है और बिल्ट इन माइक है, तो इसके सामने ये काफ़ी आउटडेटेड लगता है। Lastly, number 7. The Xbox One released in 2013. 3 साल बाद Xbox One S लॉन्च हुआ था, a sleeker and more powerful console. If you own the original, जो कि unfortunately मेरे पास है और मैं मतलब कि बहुत मुश्किल में हूँ इस वक्त, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। So you either stuck with the bulkier and outdated tech or paid full price for an upgrade. Now the same thing will happen with the Xbox Series S/X. Microsoft will find a way to make the console smaller, perhaps in different colors too. Considering the company is struggling to produce enough consoles to meet demand due to global chip shortage, and so you probably cannot find one in stock anyway, so you can afford to wait. Bonus 1. Should you buy an Xbox Series X/S? While these might seem like big issue to some people, perhaps they are irrelevant to you. अगर यही है तो then it is excellent. The Xbox Series S/X is a powerful machine and it's only going to get better in time. For everyone else, it's time to consider whether the PS5, Nintendo Switch or a powerful PC will be your next gaming home. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। दिस इज अहमद नदीम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।